निवेशकों की भी कहीं ना कहीं भरमार है। और निवेशकों की भरमार के साथ साथ अगर हम देखें, और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त भारत मंडपम का। We'll proceed with brief remarks ahead of the signing ceremony. May I please invite Honorable Jacob Helberg, Under Secretary of State for Economic Affairs, the United States, to deliver his remarks. I request Honorable Jacob Helberg, Under Secretary of State for Economic Affairs, to please present his address. Ladies and gentlemen, please welcome. Ladies and gentlemen, we would like to wait for a couple of minutes for Undersecretary Mr. Jacob Helberg. He's on his way and he would be here with us very soon. It's an important occasion, especially when we talk of Pax Silica. It's a historic agreement between the two governments, between the two biggest and the oldest democracies of the world. And so we are here to listen to our distinguished guests as they present their views, their remarks on Pax Silica. This is one agreement which would change the way both the countries work in this particular domain. Ladies and gentlemen, we have distinguished speakers who are going to join us, and then a very, very important signing agreement procedure, the protocols that need to be followed. तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका में अब से कुछ ही देर में भारत शामिल होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही अमेरिका के नेतृत्व वाले इस पैक्स सिलिका को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर अब से कुछ ही देर में होंगे। वहां की लगातार सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके जरिए कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत एक कदम और आगे बढ़ता हुआ इसके जरिए नजर आ रहा है। पैक्स सिलिका जो है उसकी अगुवाई अमेरिका की तरफ से की जाती है और अब इस पैक्स सिलिका में भारत भी आगे शामिल होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि एआई के क्षेत्र में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। दुर्लभ खनिजों और एआई के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को सीधे तौर पर बनाने पर इसके जरिए जोर दिया जाएगा। और बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल भी हमने देखा कि कई सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस पूरे समिट में शामिल होते हुए नजर आए और उन्होंने भारत की खूब जमकर तारीफ भी की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत किस तरीके से इस समय आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया है। अगर हम देखें तो ब्रैड स्मिथ जो कि प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा कि एआई के वादे और जिम्मेदारी को निभाने में भारत काफी अहम है। जिम्मेदारी की बात उनकी तरफ से कही गई और भारत इस पर लगातार कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो इस्तेमाल तो हो लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो। और जो भी कंटेंट की अगर हम बात करें तो जो भी कंटेंट में अगर एआई का इस्तेमाल होता है तो उसको भी साफ तौर पर दिखाया जाए, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत वीडियो को भी सही सच मान बैठते हैं। ये बात बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही एआई का भविष्य जो है काफी हद तक भारत में ही लिखा जाएगा, ये बात भी राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से कही गई। और रसोफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वैलेंटाइन मकारोव, उनकी तरफ से भी भारत को लेकर काफी कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि भारत में एआई लीडर बनने की आकांक्षा भी है और भारत में एआई लीडर बनने की क्षमता भी मौजूद है। एआई के मामले में भारत इस समय अग्रणी है। और साथ ही एन चंद्रशेखरन जो कि तो सीधे तौर पर भारत इस समय लगातार आगे बढ़ रहा है और वहां की सीधी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो भारत का जो वैश्विक एआई संवाद है वो इस समय 5 दिन का ये समिट और 5 दिन के समिट में काफी खास कुछ निकलकर सामने आया है। इंडिया एआई समिट की अगर हम बात करें तो इससे इतर भारत और दुनिया के कई सारे देश इसमें शामिल होते हुए नजर आए। हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, चेयरपर्सन है सेंटर ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स के आईआईटी मंडी से। डॉक्टर अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। 5 दिनों का ये समिट जिसका आज 5वां दिन है, हालांकि एक दिन और समिट का बढ़ाया गया है आम लोगों के लिए जिससे कि वो भी इस समिट में शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन ये जो 5 दिन रहे, आज का दिन अगर मिला लें तो कैसा आपको पूरा ये नजर आता है भारत के लिहाज से? भारत एआई के क्षेत्र में आगे और कितने बड़ी छलांग लगाता हुआ आपको नजर आता है इस समिट के जरिए?
अगर आप देखेंगे ये जो समिट हो रहा है ये लैंडमार्क इवेंट है भारत के लिए, क्योंकि हमें भी ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है और इसके अलावा ग्लोबल वर्ल्ड को भी एक मैसेज जा रहा है कि भारत की एआई टेक्नोलॉजी में जो प्रिपेयर्डनेस है वो कैसी है और जागरूकता कितनी है। अगर आप देखेंगे एआई समिट में वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने वाले। भारत ने खुद का अपना जो सॉवरिन मॉडल भी लॉन्च किया है और आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक लर्निंग है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरह से चर्निंग हो रही है भारत में। मतलब भारत की इमेज जो है ग्लोबल वर्ल्ड में कि यहाँ के लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितने जागरूक हैं, और इसके अलावा हमारे लोगों को भी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिल रहा है। आप देखिए जितने भी एआई के टॉप लीडर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओपन एआई टू गूगल का जेमिनाई जो है, एंथ्रोपिक, सारे टॉप लीडर एक मंच पर अगर आज भारत में आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम कहीं से भी पीछे नहीं हैं और हमारे लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसका जो हम फ्यूचर देखते हैं, जैसे भारत अगर आप देखिए एक ग्लोबल लीडर है, अगर आप देखें एआई रैंकिंग में भारत इज थर्ड एक्चुअली, जहां पर कि हम हमारा जो टैलेंट पूल है, हमारा जो एआई कॉम्पिटिटिवनेस है, टेक्नोलॉजी एआई का जो पेनिट्रेशन है एक्चुअली वो बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है। तो ये समिट बहुत अच्छा और पॉजिटिव संकेत दे रहा है हमारे लिए कि हम इसमें कैसे और आगे बढ़ें और कंट्रीब्यूट करें। जी इसके साथ ही डॉक्टर अमित, अगर हम देखें तो बीते कल कई सारे वैश्विक नेताओं को भी हमने सुना, कई सारे जो बड़ी कंपनी के सीईओज हैं उनको भी हमने सुना, और सबने भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है एक ही क्षेत्र में, हर किसी ने उसका जिक्र किया और भर भर के तारीफ भी इसको लेकर की गई। क्या ये माना जाए कि भारत इस समय हर एक क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहा है, और सिर्फ खासतौर पर सिर्फ भारत आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि विश्व के जो तमाम अन्य देश हैं उनको भी अपने साथ लेकर चल रहा है? देखिए अगर आप देखिए हर कंट्री का अपना एक मॉडल होता है इकोनॉमिक्स का, और भारत 1.4 बिलियन लोगों का समाज है। हम बहुत डाइवर्स कंट्री हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतनी सारी भाषाएं हैं, रीजनल डाइवर्सिटी है। उस सिचुएशन में हमारी जो नेचुरल अप्रोच है टेक्नोलॉजी की भी वो समावेशी है। हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है अमित जी, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं भारत मंडपम का। They had not yet learned to pronounce the word no. Alexander viewed himself as a conqueror speaking to a world of subjects, and after traveling 11,000 miles for 8 years, it was in India that Alexander finally met his match and turned around. He did not know India, and India said no. The truth is, both of our nations were forged by that very word. Both of our nations claimed their freedom by learning to say no. We are the people who looked at a king oceans away and refused to quietly acquiesce. We rejected the counsel of polite society and broke centuries of colonial rule to take our destiny into our own hands. That spirit of defiance, that insistence on self-determination, is the fire that burns at the heart of both of our democracies. And today we are called upon to summon that spirit once again. For too long, we have allowed the foundations of our economic security to drift. We find ourselves grappling with a global supply chain that is massively over-concentrated. We watch as our friends and allies face daily threats of economic coercion and blackmail, forced to choose between their sovereignty and their prosperity. We have seen the lights of a great Indian city extinguished by a keystroke from across the border. And we've seen our friends denied essential minerals simply because a leader dared to speak her mind. So today, as we sign the Pax Silica Declaration, we say no to weaponized dependency, and we say no to blackmail. And together, we say that economic security is national security. But we must be precise about what that word means. There are some who use the words like global governance and sovereignty in the same breath, just like Orwell used freedom and slavery interchangeably. America and India are not deceived. Sovereignty does not come from a global bureaucracy. It comes from builders, from the very builders present in this room today. It comes from the builders of smelters and oil wells, airplanes and expressways. And it comes from the hardworking people who physically build the rails of the future. And through the joint statement that we're signing today, the United States and India are affirming our embrace of a pro-innovation approach to AI against those who would constrain us to set us back.
But our fundamental mission is not resistance, it's renewal. We are forging a supply chain that is the foundation for prosperity. We are building a new architecture that diffuses intelligence, placing the awesome power of AI into the palm of our people's hands and unleashing a wave of unprecedented possibility. From the minds to the models, we are securing the full stack of the future, the minerals deep in the earth, the silicon wafers in our labs and fabs, and the intelligence that will unleash human potential. Pax Silica is our declaration that the future belongs to those who build. And when free people join forces, we do not wait for the future to be given to us, we build it ourselves. I want to end by thanking my good friend and colleague, Ambassador Sergio Gore. Sergio and his leadership has been the bridge for this very moment. His work to bring our nations closer together is a testament to the vital importance that the United States places on this friendship. Sergio, thank you for your service and your energy. Will you please all join me in giving Ambassador Gore a very warm welcome? Good morning, namaste. It is great to be here with you all. Thank you, Jacob. I want to just say a quick word about Jacob. Jacob's an incredible friend, but Jacob also cares deeply about this relationship. This initiative, Pax Silica, would not be happening if it's not for Jacob Helberg. So a round of applause to him. What an honor to stand before all of you here today, here in New Delhi, at this historic moment as we welcome India into Pax Silica. Just over a month ago, I arrived in this extraordinary nation as the US ambassador. In my first weeks, I've walked the halls of South Block, met with innovators in Bangalore, and broke bread with entrepreneurs who are building the future. What struck me most wasn't just India's scale, although that is breathtaking. It's India's resolve, the determination to chart your own course. I keep talking about the limitless potential between our two nations, and I truly mean it. From the trade deal to Pax Silica to defense cooperation, the potential for our two nations to work together is truly limitless. And I aim to fulfill that over the next 3 years that I'm here. Earlier this month, we concluded the interim trade agreement, a deal that shapes the economic contours of the Indo-Pacific. We overcame friction points that had held us back for far too long. That agreement wasn't just about trade flows or tariff schedules. It was about two great democracies saying we will build together, not just buy from one another. And now today, we take the next step. India joins Pax Silica, the coalition that will define the 21st century economic and technological order. I'm delighted to welcome Jacob here. I'm also delighted to welcome the OSTP Director, Michael Kratsios, who's the head of our delegation at this very important summit. The US leads in a strategic coalition which is designed to secure an entire silicon stack, from the mines we extract critical minerals, to the fabs where we manufacture chips, to the data centers where we deploy frontier AI. It's a coalition of capabilities that replaces coercive dependencies with a positive sum alliance of trusted industrial bases. Pax Silica will be a group of nations that believe technology should empower free people and free markets. India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world, and especially with partners like India. And critically, India brings strength.
Peace doesn't come from hoping adversaries will play fair. We all know they won't. Peace comes through strength. India understands this. India understands strong borders. India understands this part of the world. That strength, that sovereignty, is exactly what Pax Silica amplifies. Because here's the truth: strength multiplies when it's connected. When Minister Vaishnaw and Minister Jaishankar traveled to Washington in recent weeks, they came as partners, forging the future. Their discussions on critical minerals were about interdependency among strong actors, about building supply chains that will not be held hostage. America is building coalitions of the capable and the willing. We're ensuring the technologies that will define the next century. AI, space, and advanced semiconductors are developed, deployed, and controlled by free nations. And we're doing it in a partnership with the world's largest democracy, a nation of 1.4 billion people that share our values and our vision. We welcome India joining to co-found the future. Pax Silica is about whether free societies will control the commanding heights of the global economy. It's about whether innovation happens in Bengaluru and Silicon Valley or in surveillance states that use technology to monitor and control their people. We choose freedom, we choose partnership, we choose strength. And today, with India's entry into Pax Silica, we choose to win. Thank you all. Thank you, His Excellency Ambassador Sergio Gore, for re-strengthening and highlighting the enduring ties between our two nations and also for the shared vision that underpins today's milestone. May I now request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnaw to address the August gathering. Lots of young people here. कैसा जोश है? पता नहीं चला. अभी भी पता नहीं चला. आपकी जनरेशन में कोई अलग तरीका भी है? Loud cheer. Yes. अब पता चला कि there is some जोश. एक बार और. Excellent. Good. Now we start. एक और. भारत माता की. भारत माता की. ये रियल जोश है. Thank you very much, Under Secretary Helberg, Mr. Crestios, Ambassador Gore, Sundar, Sanjay, the entire team which has worked, Secretary Krishnan. I would like to extend my special thanks to Minister Jaishankar, Minister Piyush Goyal, and to the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has made all this possible, this entire AI Impact Summit, the silicon supply chain that we are building, and that huge set of new opportunities which are coming for the young population which is here. Give a big round of applause for the entire team which has worked for it. We are not just holding a summit here. We are building the future. We are laying the foundation for the young generation. आप सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सब की आज नींव रखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत को एक विकसित भारत बनाने का सपना है. भारत आज एक यंग नेशन है, 28 years मीडियन एज, लंबी ग्रोथ का पाथ है. 2047 में भी भारत एक यंग नेशन रहेगा विद 37 years की मीडियन एज.
And that means beyond 2047 also, there will be a growth period of another 50 years. Another 50 years. उस ग्रोथ के भागीदार आप होंगे, उस ग्रोथ को बनाने वाले आप सब यंग माइंड्स होंगे, उस ग्रोथ का जो बेनिफिट लेना है उसका भी, उसके भागीदार भी आप सब होंगे। 1947 से अगर यही स्पिरिट रहती तो कितनी कंपाउंडिंग हो गई होती भारत की ग्रोथ में, वी कैन ऑल इमेजिन। कोई दिक्कत नहीं, 2014 से ही सही। अब इस कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपकी जनरेशन को मिलेगा। आई वुड लाइक टू थैंक all the participants and special thanks to the efforts done by Ambassador Sergio Gore, Under Secretary Helberg, and Mr. Crestios for making India part of the Pax Silica. And there are good reasons for it. Today, our talented engineers are designing the most complex, most advanced 2-nanometer chips here in India. 2-nanometer chips. और दोस्तों, 2 नैनोमीटर चिप्स, 2 नैनोमीटर की चिप्स दुनिया में डिजाइन करने वाले लोग इस हाथ से ज्यादा काउंट नहीं कर सकते। ये कैपेबिलिटी हमारे इंजीनियर्स की है। We all know semiconductor industry will need about 1 million more talented people. 1 million more. 10 लाख से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख लोगों की। वो टैलेंट कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से आएगा? यहीं से आएगा। और उसकी तैयारी कैसे की है? 315 यूनिवर्सिटीज, 315 यूनिवर्सिटीज। आज स्टूडेंट्स के पास में वर्ल्ड के बेस्ट सेमीकंडक्टर डिजाइन टूल्स हैं, सिनॉप्सिस के, कैडेंस के, सीमेंस के, और एब्सोल्युटली फ्री। स्टूडेंट्स को 1 रुपया भी वहां पे कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। और इसका रिजल्ट आया है। ये 22 में प्रोग्राम चालू किया था। आज आसाम से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, केरल से, तमिलनाडु से, सब जगह से स्टूडेंट्स चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो चिप्स कहते हैं, पोटैटो चिप्स याद आती है उनको। छोड़ो उनको, वो अभी थोड़ा रोना धोना है उनका, चलता रहेगा। कभी पार्लियामेंट में रोते हैं, कभी कहां रोते हैं। चलता रहेगा वो सब। तो हमें आगे बढ़ना है। देश को एक दिशा, एक क्लियर एम, एक क्लियर गोल है देश के सामने, और उसमें है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लीडरशिप लेनी है दुनिया की। आज जब 315 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नौजवान चिप डिजाइन करते हैं, उनके लिए SCL मोहाली में चिप को फैब्रिकेट करने की, मैन्युफैक्चर करने की, टेस्ट करने की फैसिलिटी है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक जब स्टूडेंट निकले कॉलेज से, सेमीकंडक्टर की बात केवल डिस्कशन में नहीं रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। जब इंटरव्यू में बैठे, जब स्टार्टअप VC के सामने जाए, मैंने ये चिप डिजाइन की है, ये चिप वर्किंग है, ये वैलिडेटेड है, ये सर्टिफिकेट है, मैं जानता हूं इस सब्जेक्ट को। उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे नौजवान आज इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो ये 1 मिलियन का टैलेंट भारत से ही आएगा। और ये 315 का नंबर हर हफ्ते बढ़ रहा है। हम लोग शुरुआत जब की थी 50 यूनिवर्सिटीज का सोचा था, बहुत तेजी से वी वेंट टू 100 यूनिवर्सिटीज, और तेजी से गए 150, 200, अब 300 यूनिवर्सिटीज में। अभी हाल ही में डावोस में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का राउंड टेबल था। मैंने इंडस्ट्री को ऐसे ही पूछा कि भाई बताओ, दुनिया में कितने देश है जहां पे, कितनी यूनिवर्सिटीज है जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस, सीमेंस, सारे के सारे डिजाइन EDA टूल्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। काउंट करने लगे, 20 से ज्यादा काउंट नहीं कर पाए पूरी दुनिया में, भारत में 315।
ये कैपेबिलिटी अपने को डेवलप करनी, ये स्केल डेवलप करना है। और दुनिया में भारत आज एक ट्रस्टेड कंट्री की तरह देखा जाता है। इंडिया इज अ ट्रस्टेड कंट्री, and that's because our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has conducted the foreign policy in a way where that trust and respect, the respect of a 5,000-year-old civilization, that gravitas, that जो भारत की civilization का ठहराव है, वो ठहराव आज दुनिया मानती है, वो gravitas आज दुनिया मानती है, और इसीलिए भारत पे ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के कारण आज पैक्स सिलिका का हिस्सा भारत बन रहा है। मैं वेलकम करता हूं आप सबको, और विशेषकर जो साथी यूएस साइड में काम किए थे, आप तीनों को माय बिगेस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल द 3 ऑनरेबल गेस्ट्स फ्रॉम द यूएस फॉर taking out time to be part of this Pax Silica signing, and I'll now request the Pax Silica signing ceremony to be done. Thank you दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की। Thank you. बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी, आपके ऊर्जावान, प्रेरणादायक और दूरदर्शी संबोधन के लिए। Ladies and gentlemen, I would now like to invite the signatories to kindly proceed to the dais. Under Secretary, Mr. Jacob Helberg, His Excellency Ambassador Sergio Gore and Honorable Ministers already on the stage. I also invite Shri S. Krishnan, Secretary, Ministry of Electronics and IT, Government of India, and Mr. Michael Kratsios, Director, OSTP, US. Ladies and gentlemen, and now the Pax Silica Declaration is being signed between India and the United States of America. The Pax Silica Declaration is being signed by Honorable Under Secretary Jacob Helberg, His Excellency Ambassador Sergio Gore, and the Secretary, Mr. S. Krishnan. And now, once the declaration has been signed by the respected signatories, the declaration will be exchanged. I request our distinguished guests to kindly hold up the signed declaration for the official photograph. I request our distinguished guests to kindly proceed to the photo point on the right of the stage in front of the flags for the official photograph. We are going to have an official photograph. So may I please request our distinguished guests to kindly proceed to the point in front of the flags on your right. That will give us the right picture for this photo op. So once again, we are going to have this photo op. I would like to now also request CEO of Micron, Mr. Sanjay Mehrotra, and Mr. Randhir Thakur, CEO of Tata Electronics, to please join us for a photo op on the stage.
I also invite CEO of General Catalyst to come on the dais, please. I thank our distinguished guests for that photo op. It's a great moment when Pax Silica Declaration has been signed between India and the United तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहां पर अमेरिका के नेतृत्व वाले इस पैक्स सिलिका की पूरी टीम में इस समय भारत भी इस समय शामिल हो चुका है और भारत के शामिल होने से ये गठबंधन और ज्यादा मजबूत, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में